कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया आपने से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बनाने। धन्यवाद। तो प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले एक छोटी सी कविता शीतल साहू जी की है। सुनो धृतराष्ट्र, अब तो बंद आंखें खोलो, मोह और लालच को त्यागो, अन्याय और द्वेष को छोड़ो, उड़नता और पाप को दंडित करो और न्याय और सद्भाव के राह पर बढ़ो। आधुनिक भारत के वर्तमान धृतराष्ट्र श्री 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 नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया घूम लेते हैं, कभी मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी टाइम नहीं है मणिपुर के लिए। और राहुल जी के विजिट के दरमियान हमने एक और एक्टिंग का जो है डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन हमने देखा था, वो है मणिपुर के मुख्यमंत्री का। पिछले बार अश्विनी वैष्णव जी का एक्टिंग आपने देखा था, आपको याद होगा, बालासोर वाले में। भारतीय जनता पार्टी में पूरे सभी लोग कलाकार हैं, सच में, ऑल वंडरफुल एक्टर्स। आप देख लीजिए, बीरेन्द्र सिंह को 3 बार उन्होंने राज्यपाल महोदया से टाइम लिया था, 3 बार, 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे इस्तीफा देने के लिए। और इस्तीफा देने से पहले सेट कर दिया था अपने लोगों की, जो है उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी को, लोग को गाड़ी में भर भर करके वहां पहुंचा दिए और बोले कि लोग का जो है ना प्यार है, हमको जो इस्तीफा देने पहुंचने के रोक रहा है इस्तीफा देने से। देख लीजिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने लोग को गाड़ी में अपने से भर करके गवर्नर हाउस पहुंचा देते अपने लोग को, और फिर बोलते कि जनता का प्यार है ना। कमाल की बात बीरेन्द्र सिंह जी का। और उसके बाद बीरेन्द्र सिंह जी कहते हैं कि भारी ताकतों का जो है हस्तक्षेप है मणिपुर में, आउटसाइड फोर्सेस हैव इंटरफियर्ड इन मणिपुर। और तो और विचित्र है, अगर भारी ताकत मणिपुर में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जी क्यों नहीं जा रहे हैं? अजीत डोवल जी तो कश्मीर इतने बार चले गए हैं, मैं तो उनके लिए क्योंकि मैं खोज रहा था, अजीत डोवल जी तो कुछ एक बार में मणिपुर नहीं गए, लेकिन ये कश्मीर में बिरयानी खाते हुए फोटो मिल गए, क्योंकि मणिपुर का एक भी फोटो नहीं है, वो गए नहीं है ना बॉस। कश्मीर से बिरयानी खाने के लिए पहुंच जाते हैं अजीत डोवल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर।
जो स्टोरीज हम लोग बनाते हैं कि नेशनल अजीत डोभाल पहुंच गया, अजीत डोभाल पहुंच गया। भाई साहब, मणिपुर क्यों नहीं पहुंच रहे हो? आप ही का सीएम बोल रहे हो कि बाहरी ताकत उसमें शामिल है, तो एनएसए क्या कर रहा है? एनएसए टोटली गैप। अमित शाह जी का तो आप मैंने बता दिया, वो तो 3 दिन अपना खाना पूरी करके निकल गए। मणिपुर के जितने भी हत्याएं हुई हैं, विस्थापित हुए, आप लोग को जो बार बार कांग्रेस पार्टी ने आपको बताया है, बट सबसे विचित्र चीज मैं आपको जब बताना चाहूंगा, एक आदमी का विजिट से, इस व्यक्ति के विजिट से पूरी सरकारी तंत्र का दिमाग खराब हो गया था। जब राहुल जी इम्फाल पहुंचे, और मैं आप उसको उसके बारे में 2 सेकंड बताना चाहूंगा। राहुल जी ने तय किया था कि हम रोड से जाएंगे, और उसका कारण भी मैं बताना चाहूंगा। सरकार चाह रही थी कि सिर्फ हम एक ही समुदाय के जो है कैंप टच करके वापस आ जाए, ताकि और भी माहौल खराब हो जाए। ये इनका षड्यंत्र था। आप देख लीजिएगा कि सत्ता में बैठे हुए लोग चाह रहे थे कि हम चुराचांदपुर पहुंचे जहां पर कुकी समुदाय के लोग हैं, लेकिन मोइरांग नहीं पहुंचे जहां पर मैती समाज के लोग हैं। पूरे गंभीरता के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। और जब हम मोइरांग के बिष्णुपुर में गाड़ी के कारकेट में आगे बढ़ रहे थे, तो वहां पर जो है हम लोग को रोका गया, वहां के डीएम और डीसी और एसपी से। और मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख दुष्प्रचार के सरगना संबित पात्रा, क्योंकि उनको झूठ बोलने की इतनी आदत हो गई है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को रोका गया। अरे भाई साहब, जिसको रोकता है वो थोड़ी उनका पीठ दिखाता है, वो तो पुलिस को, जो पुलिस बैरिकेड को तोड़ रहे थे लोग, और आप लोग में से सब लोग यहां पर कुछ लोग उपस्थित थे। अब झूठ बोलने का भी सीमा है। पब्लिक जो है बैरिकेड को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज लेट राहुल जी गो। और वहां पर एक नारा चल रहा था, ना जाऊंगा ना जाने दूंगा। सीरियसली, ना जाऊंगा, मोदी जी नहीं जाएंगे, ना जाने दूंगा, राहुल जी को नहीं जाने देंगे। अब बताइए यार, लेडीज बैरिकेड तोड़ रहे थे, राहुल जी वहां से हटे नहीं। टीयर गैसेस चले, यहां पर काफी लोग को जो है, हमारे पुलिस से इतने दिन की नौकरी हुई, इतने आंसू गैस हमने छोड़ा था, लेकिन कभी भी जो है टीयर गैस हमारे आंख में नहीं लगा। पहली बार जो है ये अनुभव मणिपुर में हमें मिला। हाँ, सीरियसली, बिकॉज जब आप फेंकते हो तो उस तरफ पीछे नहीं आता है ना, इस बार हमारे तरफ ही आ रहा था। लेकिन राहुल गांधी जी डिड नॉट मूव। ही सेड नो, आई विल गो एंड मीट द पीपल ऑफ मणिपुर इररेस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटीज। और हजारों की संख्या में महिला लोग जो है बोल रहे थे कि लेट मिस्टर गांधी गो, लेट मिस्टर गांधी गो। व्हाई इज द गवर्नमेंट ब्लॉकिंग योर विजिट? व्हाट इज द हिडन एजेंडा? पीपल ऑफ मणिपुर एंड द भारतीय झूठा पार्टी हैज नो सेंस ऑफ शेम। तनिक से भी लोक लाज नहीं कि प्रेस में, उनके कार्यालय में बैठ करके झूठ बोलते हैं। आपके ही साथीगण वहां पर उपस्थित थे। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, लेट राहुल गांधी गो। जब फाइनली जब हम आगे नहीं बढ़ पाए, तो जब डिसीजन हुआ कि हम पीछे वापस जा रहे हैं, तो बिशुनपुर से इम्फाल तक महिला लोग खड़े थे रोड में ताली बजाते हुए, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो है कंजेनिटल लायर्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, हिंदी में जन्मजात झूठे, they will continue to tell lies. So the important part, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है,
एंड मैती हो या कुकी समाज हो, सबके जबान में एक ही शब्द था कि वी वांट पीस, वी वांट पीस, वी वांट पीस। हम लोग लौटे, फिर तुरंत हेलीकॉप्टर का व्यवस्था की गई। हम लोग चुराचांगपुर में जो है जितने भी कुकी समाज के रिलीफ कैंप में गए थे, वर्तमान में वहां पर मणिपुर में 350 से ऊपर रिलीफ कैंप्स चल रहे हैं। राहुल जी ने उस पर भी जो है गवर्नर महोदया को जो है काफ़ी उन्होंने उन पर उस विषय पर भी उनको जो है फीडबैक दिया कि व्यवस्था, दवाइयों की कमी है, सेरेलैक की कमी है बच्चे के लिए, बहुत सारे बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, डॉक्टर्स की कमी है, इलाज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही उचित नहीं है। चुराचांगपुर में जितने लोग से मिलने के बाद रिलीफ कैंप्स, उसके बाद वापस इम्फाल राहुल जी आए और उनके टीम में वेणुगोपाल जी थे और बाकी जो कांग्रेस के बड़े नेतागण, इबोबी सिंह साहब, मेघा चंद्र जी पीसीसी, गायकाम जी जो हमारे सीडब्ल्यूसी के स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं, विक्टर कैशिंग और अन्य लोग थे। उसके बाद इम्फाल के एक कैंप में हम पहुंचे और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, कुछ लोग साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, आप प्लीज स्टार्ट शोइंग द स्टोरीज ऑफ द रिलीफ कैंप्स ऑफ मणिपुर। इट इज हार्ट ब्रेकिंग। हमारे कुछ डोंगी राष्ट्रवादी एंकर तो फ्रांस के बारे में इतने जो है टीवी शो चला रहे थे, मैं तो डर गया था कि फ्रांस में क्या हुआ, एक आदमी मरा, दो आदमी मरा, एक तो गिर गया था बिल्डिंग से, दूसरा मणिपुर में भाई साहब 160 लोग मरे हैं। लेकिन कार्यक्रम जितना फ्रांस का चला वो तो मणिपुर में कभी मणिपुर के बारे में चला ही नहीं। गलत बोल रहे क्या? जितना कार्यक्रम मणिपुर फ्रांस के बारे में दिखाया गया हमारे डोंगी राष्ट्रवादी एंकर द्वारा, और हम यहां पर उपस्थित पत्रकार को मैं सलाम करता हूं क्योंकि यू हैव बीन वेरी ब्रेव, आई नो दिस, सो आई हैव नो कंप्लेंट्स, बट आई डेफिनेटली हैव कंप्लेन फ्रॉम 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock। फ्रांस में 2 व्यक्ति, एक गोली से और एक बिल्डिंग से गिरकर, उसके लिए आपने लगातार कार्यक्रम चला दिया, लेकिन आप मणिपुर के बारे में कुछ नहीं दिखा रहे। आप मतलब मालिक। उस मीटिंग के बाद दूसरे दिन हम लोग पहुंचे मोइरांग। Moirang is one of the most historical important places because historically it is the first place in the soil of India where Netaji Subhash Chandra Bose unfurled the Tiranga. उसी नेशनल मॉन्यूमेंट के बगल में एक रिलीफ कैंप है, वहां पर भी राहुल गांधी जिंदाबाद का बोर्ड, थैंक यू फॉर कमिंग राहुल गांधी, थैंक यू कांग्रेस पार्टी के नारा लग रहे थे, और हेलीपैड से लेकर के पूरे शहर में नो कांग्रेस फ्लैग, ओनली प्लेकार्ड्स थैंकिंग द कांग्रेस पार्टी एंड सेइंग वी वांट पीस। किसी के बारे में शिकायत नहीं। उसके बाद हम लोग गए, वापस आए, सिविल सोसाइटी के साथ, नागा काउंसिल के साथ हमारी मीटिंग हुई, सिविल सोसाइटीज के साथ हमारी मीटिंग हुई, सब फीडबैक लेने के बाद गवर्नर साहब के वहां पहुंचे। बीरेन सिंह साहब एडजस्ट कर रहे थे कि एक्टिंग का टाइम कब करना है, क्योंकि वो राहुल जी के जाने के बाद ही करना चाह रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि टाइम शिफ्ट करते रहे। हाँ, बिकॉज ही नीडेड टू ऑल्सो प्रैक्टिस एंड सेंड हिज पीपल। सो 1:30 वी मेट द गवर्नर। हम गवर्नर मैडम को धन्यवाद देना चाहेंगे, अनुसुया जी को। उन्होंने पूरी तरह से राहुल जी और वेणु जी के बात उन्होंने सुना। राहुल जी ने 4-5 प्रमुख बातें उनके सामने रखे। पहली बात यह है कि कैंप्स की स्थिति अच्छी नहीं है, एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, जो डायबिटिक, हाइपरटेंशन, उनको कोई दवाई नहीं मिल रही है। बच्चे के लिए, जो खास तौर से छोटे शिशु के लिए जो है सेरेलैक वगैरह का व्यवस्था नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सेकेंड इज वायलेंस हैज टू बी स्टॉप्ड, उनका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था कि द लीडरशिप ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन मणिपुर हैज फेल्ड एंड इज रिस्पॉन्सिबल। द लीडरशिप हैज फेल्ड। उसके बाद उन्होंने कहा इससे ज्यादा मैं पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता हूं क्योंकि हमारा मिशन पीस है। फिर उसके बाद वो दिल्ली लौट गए। हमारा इतना ही कहना है कि आप फोटोज देख लीजिए। इस संबित पात्रा को या तो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है इंग्लिश का, तो बता दीजिए ये क्या है, गो बैक है कि वेलकम है? I am happy Sambit Patra didn't practice medicine anymore. No, seriously, because
कभी स्पोक्स पर्सन का डैमेज तो लिमिटेड है, इमेजिन प्रैक्टिस करता तो कितना डैमेज होता, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने में नहीं आता है। ये तो वेलकम है ना भाई साहब, गो बैक नहीं है ना यार, ये तो वेलकम है सीरियसली। बट बीजेपी, उनकी गलती नहीं है, बीजेपी के लोगों का दिमाग की वजह से कम है, बिकॉज फास्ट और फ्यूरियस 8 का जो वीडियोस चल रहे थे ना, उसको बोल दिया कि जो है वो फ्रांस का राइट है। तो बीजेपी लाइक इट्स नॉट संबित पात्रा's फॉल्ट, बीजेपी बाय नेचर इज लो IQ। उनका जो कोई गोस्वामी जी था, एक सेकंड है, उसका नाम मैंने लिखा था, हाँ, गोपाल गोस्वामी जी और सत्या सनातन, ये दोनों ने ट्वीट किया था। बाकी लोग, बहुत सारे लोग हैं बीजेपी के, मंत्री मिल जाएंगे, जो फास्ट और फ्यूरियस 8 का जो गाड़ियां गिरती हुई थी ना, वो गिरते हुए बिल्डिंग का एक वो फिल्म चल रहा है ना, याद है? उसको बोल दिया कि फ्रांस में जो गाड़ियां गिर रही है आसमान से। सो नॉट संबित's फॉल्ट, ही इज बाय नेचर इट इज ही इज चैलेंज्ड, ही कांट हेल्प इट। तो ये है स्थिति। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू that Mr. Gandhi is the only national leader who went to Manipur and who bravely visited every possible community and people who are suffering. He raised the issues with the right people, the governor. And I think the effect of Mr. Gandhi's visit, you can already see that schools and all, slowly things are hopefully returning to some amount of normalcy. But please remember, एक चीज याद रखिएगा, Rahul ji told this during the meeting also, that he has never seen something so disturbing in his life. Communities के बीच में जो दरारें हैं, उसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। It will take time. It is terrible. The distrust is horrible. So, before I finish, there was a nice line I read. लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। Now I will hand it over to my colleague, Gourav Gogoi ji, Member of Parliament. Thank you. Thank you, Ajoy ji. Thank you, Mr. Vineet Punya, and to the members of the press. I'll address in English. The situation is still not normal in Manipur. There is a tremendous level of pain, grief, and hatred and enmity felt by people belonging to all communities, and they all feel let down. The primary responsibility of any state government is to secure law and order and protect the life of its citizens. And I think the government, both at the state and at the center, have failed to do that. Now, the bonds which have been broken in Manipur, I think it will take a long time to heal. Congress is willing to be part of that healing process. It is to start and initiate the process of healing that Sri Rahul Gandhi ji went to Manipur. It is to start the process of healing that he spoke about peace and dialogue. He did not make a political statement on his 2-day visit. And we hope that the Prime Minister takes a cue and visit the state, because it has been a mystery as to why the Prime Minister has completely avoided going to Manipur or talking about Manipur. I remember in January there was a meeting that was going to be held in India between Prime Minister Modi and then Prime Minister of Australia, Prime Minister Scott Morrison. That meeting was scheduled to be in India. Prime Minister Scott Morrison, former Prime Minister of Australia, did not come to India. He cancelled his visit at that point. Why?
because there were forest fires in Australia. India and Australia are important partners, no doubt. But that Prime Minister said, I have to go back to my state, to my country, and to be in, and witness the rescue operations. And our Prime Minister chose to go to the US, attend a state dinner, come back, attend election rallies, and still does not find the space in his heart, because there is time in his schedule, but there is no space in his heart to visit Manipur and hear the tales of pain and grief, of horrifying violence. It's absolutely, it's a huge sense of disappointment and rejection. Yesterday, the Indian football team won the South Asian Football Championship. And even the captain said that we want people to visit Manipur. The Prime Minister found the time to tweet that congratulations to the men in blue for winning the football tournament, but half of the people of that Indian football team are from the Northeast, and we all feel the pain of the Northeast, even though we are from other states. So Prime Minister Modi ji, you have the time to tweet, but you don't have the time to visit. You went to Odisha as you should have when the train crash took place. But are people in Manipur, do they occupy a lower place in your heart? That's the question. And you cannot discount for the fact that the politics of BJP is destabilizing the Northeast. And as a result of BJP's politics, we are facing an increasingly divided, turbulent, conflict-prone Northeast. The Northeast had emerged from 2 decades of insurgency and entered into a piece of relative calm and stability during the leadership of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. But what we are seeing right now is a very dangerous pattern towards things going back to where they were. We have seen violence in Manipur. We have more than 4,000 weapons and lakhs of ammunition which have been looted from police treasuries by ordinary citizens. 4,000 weapons and ammunition are still with the people of Manipur, who are at odd ends with each other. The army so far, or the government so far, has managed to recover only close to 1,100. There still are a lot of weapons in the hand of citizens and ammunition in the hand of citizens who are increasingly feeling alienated and isolated because of the actions of the Prime Minister. We are all concerned in the Northeast when we are seeing homes being destroyed, churches being burnt, and government is quiet. It's a horrific sight, and it sends down, it creates a sense of, an emotional trauma when you see a church being burnt. You might be in Mizoram, you might be in Nagaland, you might be in Meghalaya. You feel, and when juxtaposed and contrasted with the Prime Minister's ignorance towards what's happening, why has there been no follow-up on the letter shared by a leader of the Kuki militant group, stating that at one point before the state elections, his help was sought by the current Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma? Why has there been no investigation into this letter? There has been no clarification. Is that the new norm of the BJP? It's another reason why
the Northeast is becoming increasingly more unstable. We said it before the Manipur election also, that the underground outfits are being quoted by the BJP to suppress voters. We had said this, and I remember there was a press conference here also. And we've been reminding, the Congress has been stating from day on day, year after year, that you are destabilizing the Northeast by your divisive politics. We have seen the same pattern in Assam. When the Citizenship Amendment Act was passed, you saw the riots that took place, the violence that took place. You see violence on the borders between Assam and Meghalaya, when 6 people lost their lives in the last 1 year. You've seen violence on the border between Assam and Mizoram, where 6 policemen and a civilian lost their life. 60 people were injured when police of 2 states belonging to the same political formation, the NEDA, were fighting on each other. We saw a war of words between the Mizoram Chief Minister and the Assam Chief Minister. In the last 1 year, we've seen border violence on Assam-Arunachal Pradesh border, when 2 people have been killed. So these are increasingly worrying signs. And the Northeast sits on a border. It's in a part of the world which is geopolitically extremely important. And it has a larger role on our territorial integrity, on our political stability. But increasingly we are just seeing that the border areas of India are becoming vulnerable under the BJP government in the last 6-7 years. Whether you talk about the Northeast, whether you talk about Ladakh, whether you talk about Punjab, is just having unstable borders across. And what is the Home Secretary and, as Ajoy ji mentioned, what is the NSA doing? Is this not a national priority? Unfortunately, all that the BJP are interested in doing is to protect the corrupt, tax the poor, and the political elites earn money. That is the sole aim. They're treating the entire Northeast as an ATM, as a way of earning money, as a way of giving contracts to their companies listed by their wives, contracts given to companies owned by their brothers, contracts given to companies owned by their sons. That is the only modus operandi. They are protecting the corrupt and earning loot. Like the East India Company came to India and looted the wealth of India, that is what the BJPs have done. They have come to the Northeast and are just looting and plundering the wealth. In Meghalaya, Home Minister Amit Shah says this is the most corrupt government I've ever seen, and then he joins the government after Meghalaya elections. In Assam, they said that once BJP comes to power, we'll have a special investigation against Mr. Himanta Biswa Sharma, then Congress minister, then they induct him inside their own party. That's what is happening. As a result of which crime is increasing in the Northeast, drugs is increasing in the Northeast. There is no abatement. It has become a corridor for arms trafficking, human trafficking, and this is a border in which the government of India has a much more important role. So the Prime Minister comes to Northeast, he will wear our traditional clothes and wear our traditional headgear when it suits him, when he wants votes. But when there is a fire, I'm sorry, the village headman, in this case the Prime Minister, is enjoying a state dinner in the US. If not to us, at least listen to what the Indian football captain Sunil Chhetri had to say, that the Northeast is feeling hurt. And Prime Minister Modi ji, please look at us, and at us, we're saying the Northeast, please look at Northeast beyond votes and a source of loot. Please look at us with some empathy and find space in your heart to meet
with the people of Manipur. That's all I wanted to say. If you have any questions, both of us are happy to take them. Okay? Done? Acha. Question. So going forward, what are your demands from the government, and do you still demand that an all-party delegation should visit Manipur? We'll complement each other. So, as the parliament is approaching, and we've said this in the past as well, we want to take this up in the parliament. We want a specific reply from the government inside parliament. We have also asked for accountability of the state government of Manipur. We want to go beyond the drama and rhetoric that we have seen as performed by the Chief Minister Biren Singh. Arms and ammunition are still with the people. They have to be brought back. People are still feeling insecure. The army and police have yet to do more. And we want that the Prime Minister should visit the state of Manipur. I would also ask, No, that's okay. you want to talk about the relief camps as well? I think just adding a little to what Gaurav ji has said. One is that the condition of the relief camps need to significantly improve. I mean, they have been in relief camp from the 3rd of May. We need to shift. There are over 65,000 people in relief camps. We need to shift them to permanent accommodation. They are all living in college campus, school campus, living under, very, very difficult conditions. Children's education. So there has to be a concrete plan on that one. There is a need for the Prime Minister to call a meeting of all party delegations. There is a need to resolve the compensation for all the people. Also displaced people in Mizoram and Delhi. And displaced people in Mizoram, like... In Mizoram. Yeah. So the people in Mizoram who are staying, who have been displaced from Manipur. So I'll tell you just something. If the Director General of Police, previous Director General, if he can stay in from where he was the Director General of Police, unless you go there and see how bad it is, and Mr. Modi refuses to go. He's interested in booth management. Union Minister's house was Yeah. Mr. Rajiv Ranjan Singh's house was burnt. Then Nemcha Nemcha ji's, the BJP state minister's house was burnt. A number of MLAs have been burnt. So yeah. So Mr. Modi has to make a trip and have a all-party meeting. गौरव, since you're an MP, आप क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य से सांसद भी हैं, तो बतौर विपक्षी दल क्या कोई सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे, या आपको लगता है किस तरीके से इस पूरे मसले का हल हो सकता है? देखिए, सबसे पहले राहुल जी वहां जाकर शांति की गुहार लगा के आए हैं कि लोगों के बीच में शांति हो, शांति का वातावरण बनाने के लिए पहले लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा। और लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ। जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों को और मन के दर्द नजरअंदाज करते, शांति हासिल होगा। क्योंकि अब हालात इतनी खराब हो चुकी है, अब मुख्यमंत्री से हम उम्मीद नहीं करते। मुख्यमंत्री तो अब इस्तीफा का नौटंकी करने लगे। तो इस देश के प्रधानमंत्री से देश के लोग अपेक्षा करते हैं
कि वो जमीन पे जाएं और मैंने उदाहरण कि जब ऑस्ट्रेलिया और भारत के मंत्रियों के बीच एक वार्तालाप दिल्ली था फरवरी में, तो उस समय के ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री मॉरिसन ने अपना ट्रिप किया, ऑस्ट्रेलिया में रह पाए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आग ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लोगों को नुकसान। आज तो लोगों जल रहे हैं, जल रहे हैं, 100 से परिवारों ने किसी को किया है। आम लोग इतने आक्रोश में कि ज्यादा दुखों की तादाद में गोला बारूदी उनके पास है। तो इसका कमान अगर मोदी जी नहीं संभालेंगे तो जो तनाव आज दो समुदाय के बीच में आ चुका है वो और गहरा हो जाएगा। और ये हमने ना सिर्फ मणिपुर में देखा है पर दूसरे प्रदेशों में भी देखा है। तो हमारी मांग प्रधानमंत्री जी से है, हमारी मांग मुख्यमंत्री से है कि वो अपना ये ड्रामाबाजी बंद करें। जैसे कि अजय जी ने कहा कि रिलीफ कैंप्स की स्थिति बहुत खराब है, बहुत लोग अपने बेघर हो चुके हैं, मणिपुर से बाहर निकल के मिजोरम में हैं, दिल्ली में हैं। उनका रिहैबिलिटेशन के बारे में एक पैकेज सरकार तैयार करे और एक ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री जी स्वयं नेतृत्व लें, क्योंकि गृह मंत्री तो ले चुके हैं, उसका तो नतीजा हमने देखा नहीं। तो प्रधानमंत्री आज नेतृत्व लें, समस्या से भागे ना और अपनी जिम्मेवारी से भागे ना, ये हमारी अपेक्षा है। नहीं तो बीजेपी की राजनीति से एक विभाजित उत्तर पूर्वांचल बन गया है और एक अस्थिर उत्तर पूर्वांचल बन गया है, जो ना सिर्फ उत्तर पूर्वांचल के लिए पर पूरे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सर after motion. Rahul Gandhi, when he went and visited all the camps, many civil society members I saw gave memorandums and details of victims and burnt houses and all the violence that had happened. They had given lists, handed over memorandums to Rahul Gandhi. Is Rahul Gandhi deciding to meet the Home Minister, or how will he pursue the complaints? There was a girl who was crying and vehemently crying, and she had some angst and some specific request from Rahul Gandhi. So is that also being dealt? Has he made a report, or would he go and meet the Home Minister? How would he take that up is the question. And the other question which is related to it is the severe distrust in the forces, the Assam Rifles or the Manipur police. There's a deep divide, as you would know, between the Kukis and the Meiteis over it. So the entire law and order machinery seems to have cracked down, and one police or one force cannot cross over on the other side of the Lakshman Rekha. So how is the Congress party planning to take up this entire cause? So, yeah. You want to do it? See, the simple question is, if Rahul Gandhi ji could visit the relief camps to take stock of the pain of the people, and as you said, many people communicated to him their personal loss, why hasn't the government of India done so? Why hasn't the Prime Minister of India done so? Why hasn't the NSA done so? That is what we're asking. The government of India has all the resources to come up with a rehabilitation project to ensure that these internally displaced people return to their homes. They have the resources to ensure what is the loss, financial loss, and therefore the adequate compensation. Why hasn't the government not undertaken these measures? These are the questions that we are also asking. That if one person could visit, come hell or water, despite all the roadblocks put forward by the BJP, here people of Manipur want to see the Prime Minister. And yet he is going to Madhya Pradesh telling that logo ko aise gumrah karo, logo ko ye bolo,
इलेक्शन आ रहा है, उनको इन्फ्लेशन के बारे में ये समझाना, ये बताना. He has time to give talking points to spokespersons in Madhya Pradesh and get more votes, but not about Manipur. I think it just shows that it really communicates a level of, I just don't even have the words. It's almost, the height of insensitivity, and the level of insensitivity is almost brutal and inhumane. No, but I just one before that. India should know how bad it is that the Inspector General of Police, who was looking after Imphal Churachandpur zone, carries a Maiti guard up to the border and then has to leave those Maiti policemen and take cookies. It's like if the Prime Minister decides to go to Punjab by road, he takes some Haryanvi guys up to the border of Punjab and then takes Punjab guys, because the Haryanvi guys cannot enter Punjab or they will face the consequence. This is happening in independent India. And that is what, we've been trying for the past 2 months to communicate through you guys. This is not France. It's not Fast and Furious. This is actually happening. That the IG of police cannot carry his mighty bodyguards beyond the common and beyond the border, and the cookies cannot cross the mighty border. This is happening to the IG. So, like Gauravji said correctly, if this is not the balkanization or the greatest danger on the border of India, of a sensitive state, and Prime Minister cannot visit, how dare he remains a Prime Minister? How dare he, shows his face in Madhya Pradesh? How dare he shows his face everywhere else but Manipur? It's quite amazing. सर, आप क्या सोचते हैं कि अब क्या राष्ट्रपति शासन लगाने का एक विकल्प रह गया है? और दूसरा ये कि जब राहुल जी दौरा कर चुके हैं तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुलाकात करेंगे क्या और स्थिति से अवगत कराएंगे? नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से तो खरगे जी ने मुलाकात कर दिया था. देखिए, गौरव जी ने भी यही कहा है, जो प्रधानमंत्री वहां पहुंच नहीं पाते हैं वो क्या जानते हैं कि वहां की स्थिति क्या है. राष्ट्रपति शासन हो, बीरेन सिंह को हटाना नहीं हटाना तो उनका जो है उनके कार्य क्षेत्र है, लेकिन वो तो आप पूछ नहीं पाएंगे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी दिए नहीं, सिर्फ विदेश में देते हैं 2 सवाल का. बट दैट दे हैव टू आंसर. बट पीपल ऑफ इंडिया थ्रू यू शुड अंडरस्टैंड, वी हैव नेवर सीन समथिंग, सम ऑफ यू वर देयर. It is impossible to even imagine how bad it is till you go to Manipur. And when Mr. Gandhi went, everybody, and they kept saying, Rahul Gandhi, aage badho. They said the only brave man who is the grandson of Indira Gandhi and the son of Rajiv Gandhi, he's the only guy who came to Manipur. एक ही नारा था, इंदिरा गांधी का पोता, राजीव गांधी का बेटा, राहुल गांधी हीरो है. Everybody in different enclaves across Manipur was saying that. Yes, sir. Sorry. No. Okay. When you people went to Churachandpur, Yes, sir. did your Meitei colleagues accompany you there, like Ibubi Singh and others? Could they go there with you? Is one question. Good. The thing is, sir, like Mr. Modi's own track record as Chief Minister of Gujarat and all were not particularly great, really. I mean, when riots were taking place. So how could you expect that his intervention will bring changes, positive changes, peace in Manipur? So the second question first. There are certain responsibilities which come when you're a father or a mother, you're a prime minister. So Modi ji has failed miserably on that criteria. Whether he's capable or not capable, that we know is incapable, but I'm just saying he should go. Our colleagues could not travel they could not travel. They couldn't. And vice versa. Our cookie colleagues could not come. Cookies are traveling through Mizoram. IG of police cannot carry his guys, yeah? So we couldn't carry.
Sorry, sir. Can you say that again, sir? Do you see this policy of polarization or majoritarianism which is being played out and that is to be blamed for this situation? So there is a wonderful article by Major Amit Bansal I read today in the DNA or few days back, couple of days back. There is definitely an active political objective from, if you look at what is happening, that there is a desire to create a flashpoint between the minority community and the majority community by the Biren Singh government. It's very obvious. If you look at all the steps they have taken, you remove the armed forces, so various steps they have taken. सर पार्लियामेंट सेशन में क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की कि वाकई में प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है वो बहुत गंभीर बात है, तो पार्लियामेंट में आप लोग कैसे उनको विवश करेंगे कि क्या आपकी रणनीति रहेगी कि एटलीस्ट प्रधानमंत्री कुछ बोले तो सही इस मसले में? नहीं, इस सवाल यही तो है कि विवश करने की परिस्थिति क्यों पड़ रही है? नहीं, परिस्थिति की, अब ये अगर पार्लियामेंट में भी ना बोले तो कहीं ना कहीं तो कहीं अहंकार ही हो सकता है, एक जिद हो सकता है कि नहीं बोलना है, इस पे नहीं जाना है मुझे। हम ये अपेक्षा नहीं करते। हम तो अंत में हम अपेक्षा करेंगे, क्योंकि देश, प्रधानमंत्री हमारी तो ना सुने पर मणिपुर की तो सुने। मणिपुर के लोग